अब अगर हम बाकी के रिलेशंस को अगर कंपेयर करें, जैसे मैं यहां पर आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर्स हो रहे, आज अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बच्चों फिफ्थ और सिक्स्थ में क्या रिलेशन रहेगा, देखो फंक्शनल ग्रुप सेम है, अगर आप फिफ्थ और सिक्स्थ में रिलेशन निकालोगे, यहां पर आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन की, यहां पर भी आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन की, मतलब चेन में तो चेंजेस नहीं आ रहे, लेकिन आपका फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पर है और यहां पर फंक्शनल ग्रुप सेकंड पोजीशन पर है। तो फिफ्थ और सिक्स्थ में अगर आप कभी भी रिलेशन को फाइंड आउट करोगे तो फिफ्थ और सिक्स्थ में हमारा क्या रिलेशन निकलेगा, तो आज अगर हम देखें हमारे फिफ्थ में और सिक्स्थ में जो रिलेशन निकलेगा, दे विल बी नोन एज द पोजिशनल आइसोमर। अब देखिएगा मैं यहां पर आपके सामने लगभग सारी चीजें मेंशन कर दूंगा। आज अगर आपसे कोई बोले कि सिक्स्थ में और सेवंथ में क्या रिलेशन निकलेगा, अगर मुझे एक सिक्स्थ दे रखा है और अगर मुझे एक सेवंथ दे रखा है, आप बता सकते हैं इनमें क्या रिलेशन है? बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था मेटामर, ये मेरे बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ आप देखो एल्काइल ग्रुप का नेचर बदल रहा है, इधर मिथाइल आ रहा है, इधर इथाइल आ रहा है, उधर आइसोप्रोपाइल आ रहा है, इधर इथाइल आ रहा है। बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ एल्काइल का नेचर बदल रहा है ना, अगर बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप का नेचर अगर बदल रहा है तो सिक्स्थ में और सेवंथ में क्या रिलेशन आएगा? सिक्स्थ में और सेवंथ में हमारा मेटामर आएगा। आज आप देखो हम लोगों ने जितने पढ़े, हमने चेन पढ़ा, पोजीशन पढ़ा, फंक्शनल ग्रुप पढ़ा, मेटामर पढ़ा, मैं लगभग आपके सामने सारे रिलेशंस को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। आज अगर मैं एक और आपको यहां पर अगला एक एग्जांपल और समझा देता हूं ताकि मैं आपको थोड़ा सा और कवर कर सकूं। आज अगर मान लो मुझे कभी भी सेवंथ दे दिया और एट्थ दे दिया, तो ये मेरे सेकेंडरी अमाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये मेरे टर्शरी अमाइन को रिप्रेजेंट करता है। अरे बच्चों सेकेंडरी एंड टर्शरी आर अगेन कंसीडर्ड एज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इन दैट कंडीशन आज अगर आप कभी भी सेवंथ और एट्थ को अगर कंपेयर करोगे, सो दे विल बी कंसीडर्ड एज अगेन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो मेरा आपसे क्या कहना है? मेरा आपसे यह कहना है कि आज अगर हम कभी भी आइसोमर अगर निकालेंगे, देखो दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर मुझे कभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दे और मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हिसाब से अगर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना चाहता हूं, टोटल 8 स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म्ड, तो या तो आपसे बोलेगा कि हाउ मेनी आइसोमर्स कैन बी पॉसिबल ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H11N, हमारा आंसर आ जाएगा 8। अगर आपको दो अलग अलग स्ट्रक्चर, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हमारा यह है कि आपको ध्यान रखना है सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। बच्चों आप ऐसा मत सोचिएगा कि यार दोनों के दोनों ही तो अमाइन से, हाउ दे विल बी द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। नो, दे आर कंसीडर्ड एज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। और अगर आपको याद होगा तो जब मैंने फंक्शनल ग्रुप के केसेस आपके सामने मेंशन करे थे, हो सकता है मैंने उस समय आपको लिखवाया भी होगा कि हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं। तो आप कैसे क्वेश्चन को सोल्व करोगे और उनमें रिलेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, उसका एक इलिस्ट्रेशन मैंने आपके सामने रखा। अब हमारे सामने अलग क्वेश्चन आ रहा है, इसको थोड़ा सा समझना। अब मेरे सामने क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मेनी बेंजीनोइड आइसोमर्स कैन बी पॉसिबल ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O। अब आप देखना क्या बोला, हाउ मेनी बेंजीनोइड आइसोमर्स। बच्चों बेंजीनोइड आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? बेंजीनोइड आइसोमर्स का मतलब होता है कि हैविंग बेंजीन रिंग वाले आइसोमर्स, जिनमें क्या होना चाहिए? जिनमें बेंजीन होना चाहिए, ऐसे आइसोमर्स को हम बोलते हैं बेंजीनोइड आइसोमर्स। मतलब आज अगर आप C7H8O की अगर बात करोगे तो C7H8O के आइसोमर्स जब आप बनाओगे ना, तो उनमें बेंजीन तो होना ही चाहिए। अब एक काम करते हैं अपन, चलो बेंजीन तो बना लेंगे। अब एक कार्बन का गैप आ रहा है और ऑक्सीजन भी अपन को पुट करना है। अब एक कार्बन का गैप आ रहा है और ऑक्सीजन भी पुट करना है, तो हो सकता है एल्डिहाइड हो सकता है अल्कोहल हो। अब मुझे क्या पता लगेगा? अपन एक काम करते हैं, DU निकालते हैं। आज अगर अपन ने इसका DU अगर निकाला तो C7H8 का DU कैसे आएगा? C+1 माइनस H+XN, न तो हेलोजन है ना नाइट्रोजन है, डिवाइडेड बाई 2। 8 - 4 = 4। इसके DU का वैल्यू आ रहा है 4
और सामने वाले ने क्या बोला, आपके मॉलिक्यूल में बेंजीन होना चाहिए और बेंजीन के अकेले का DU4 होता है। इसका मतलब जब आप इस कंपाउंड के इस वाले कंपाउंड में अगर बेंजीन अगर बना दोगे ना, तो उसके बाद आपका कहीं पर फिर डबल ट्रिपल आपको लगाने की जरूरत नहीं है। भाई मैंने C7H8O का DU निकाला, अगर मैंने C7H8O का अगर DU निकाला तो C7H8O के DU की वैल्यू आई 4। अब आपने बोला कि आपके मॉलिक्यूल का बेंजीनोइड स्ट्रक्चर होना चाहिए, बेंजीनोइड का मतलब बेंजीन होना कंपलसरी है, बेंजीन के अकेले की DU4 आ गया, मतलब अब आपके बाकी इसके अंदर कुछ भी पॉसिबल नहीं है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो अब आप कैसे करोगे, देखो हमारा फॉर्मूला है C7H8O। अब अगर C7H8O अगर आप बनाना चाहते हो, अब आपने अगर बेंजीन बना दिया, अब एक कार्बन का गैप आ रहा है ना भाई, एक ही कार्बन का गैप आ रहा है ना, 6 कार्बन तो आप कंज्यूम कर चुके और ऑक्सीजन, तो आप एक काम करो CH2OH पुट कर दो और करने के बाद फॉर्मूला क्रॉस चेक जरूर करो। 6 कार्बन 7 कार्बन, हर जगह पर एक एक हाइड्रोजन है, 5 5 2 7 8, हमारे 8 और एक ऑक्सीजन है। अब आपको क्या करना है, OH की पोजीशन को चेंज करनी है, वहां से आप OH को हटाओ, OH को हटा करके तो इसको CH3 बना दो और OH लगाओ, इधर OH मत लगा देना। यहां पर अगर आपने OH लगा दिया तो आपके कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो यहां पर आपको OH नहीं लगाना, तो इधर से तो OH को हटा दो। OH को कहां पर लगा सकते हैं, OH को अगर मैं लगा सकता हूं तो मैं OH को लगा सकता हूं ऑर्थो पर, अगर मैं OH को लगा सकता हूं तो मैं OH को कहां पर लगा सकता हूं, OH को मैं लगा सकता हूं मेटा पर, और अगर मैं OH को लगा सकता हूं तो OH को मैं कहां पर लगा सकता हूं, OH को मैं लगा सकता हूं पैरा पर। अगर आप आगे और रोटेट करोगे तो वो तो सेम बन जाएगा, इधर रोटेट करा तो इसके जैसा और ऊपर ले जाओगे तो उसके जैसा और ये बन जाएगा। और एल्कोहल में एक ईथर भी पॉसिबल है, एल्कोहल में एक ईथर भी पॉसिबल है, तो एक आपका आइसोमर ये वाला भी बन सकता है। अब आप बोलोगे सर ऐसे बनने में तो और भी बन सकते हैं, अगर आपको CH3OH का कॉम्बिनेशन अगर बनाना है तो एक CH3OH का कॉम्बिनेशन क्या ये नहीं है, नहीं, अगर आप इसको देखोगे तो ये ऑल्टरनेट है ना, ऑल्टरनेट वाला केस तो आपने ले लिया, तो वो और ये मेरे सेम ही तो है, तो हम इनको ड्रॉ नहीं करेंगे। तो आज अगर मेरे पास में अगर आ जाए कि C7H8O के हमारे पास टोटल कितने आइसोमर्स बनेंगे, तो माई आंसर विल बी कंसीडर्ड एज अ 5। अब अपन रिलेशन निकालते हैं, ये मेरा पहला कंपाउंड है, ये मेरा दूसरा है, ये मेरा तीसरा कंपाउंड है, ये मेरा फोर्थ कंपाउंड है और ये मेरा फिफ्थ कंपाउंड है। अब आई वांट टू फाइंड आउट द रिलेशन। आपको बताना है फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है, आपको बताना है सेकंड और थर्ड में क्या रिलेशन है, आपको बताना है थर्ड और फोर्थ में क्या रिलेशन है, आपको बताना है फोर्थ और फिफ्थ में क्या रिलेशन है, और 1 और 5th में क्या रिलेशन है। अब अगर अपन 1 और 2 की बात करें कि 1 और 2 में क्या रिलेशन है, बच्चों आपको पता है आज अगर आप 1 और 2 में अगर आप रिलेशन अगर फाइंड आउट अगर करना चाहते हैं तो दे विल बी नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। आप बोलोगे सर व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, आज आपने इनको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्यों माना, भाई यहां तो दोनों के दोनों आपके OH ही है ना, देन वाई। बच्चों अगर मेरा OH सीधा बेंजीन से कनेक्ट होता है ना तो मैं उसको फिनोल बोलता हूं, OH इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द बेंजीन तो मैं उसको फिनोल बोलता हूं। अगर मेरा OH बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो फिनोल बोलूंगा, लेकिन अगर OH बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना तो मैं उसको अल्कोहल बोलता हूं। और एक बात को ध्यान रखना, क्या अल्कोहल एंड फिनोल आर कंसीडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ये हमारे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं। तो ये दोनों मेरे फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे। अब बात करते हैं 2 और 3, ये भी मेरा फिनोल है, दिस इज ऑल्सो माई फिनोल, इफ बोथ आर द फिनोल इन दैट कंडीशन, अगर आप देखोगे तो फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, दे आर द 1-2 पोजीशन, दे आर 1-3 पोजीशन, सो दे विल बी कंसीडर्ड एज अ पोजिशनल आइसोमर। अगर मैं 3-4 की बात करता हूं तो ये मेरा 1-3 पोजीशन है, ये मेरा 1-4 पोजीशन है, अगेन पोजीशन हैज बीन चेंज्ड तो ये मेरा PI कहलाएंगे। 4 और 5 वो मेरा फिनोल है और ये मेरा ईथर है। फिनोल और ईथर आर द डिफरेंट,
तो यहां पर वापस ये मेरे फंक्शनल ग्रुप माने जाएंगे। और 1 और 5, दिस इज अल्कोहल और दिस इज ईथर, अगेन दे आर द डिफरेंट, अगेन दे विल बी नोन एज द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो मैं आज आपको अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स के थ्रू, मैं आज आपको अलग अलग टाइप के इलस्ट्रेशंस के थ्रू चीजों को समझा रहा हूं कि आज अगर मैंने इसका डीयू अगर निकाला और मुझे पता लग गया कि इसके डीयू की वैल्यू 4 आई, और आपके मॉलिक्यूल में बेंजीन कंपलसरी है, अगर आपके मॉलिक्यूल में अगर बेंजीन कंपलसरी है, इसका मतलब यह होता है कि अब आपको आगे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगाने की जरूरत नहीं है। तो इन दैट सिचुएशन हमने आगे यहां पर कुछ भी कंसीडर नहीं करा और वहीं पर आंसर को जस्टिफाई कर दिया। जनरली टू टाइप ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ऑन द स्ट्रक्चरल आइसोमर। द फर्स्ट, if two structure is given to you and you want to find out the relation between two molecules, and the another is that if such type of the question is given to you and they will ask how many number of the possible isomers can be there of the given molecular formula. So in that sequence, in that series, again I want to show the next question here. How many carbonyl compound can be possible of the molecular formula C5H10O? Suppose C5H10O molecular formula is given to you and we want to find out the number of carbonyl compound. So in this question, molecular formula is C5H10O. But one thing I just want to show here, in this chemical reaction there is no any need to find out the value of du. Why there is no any need to find out the value of du? Because there is a reason. What is the reason behind it? Because in the chemical reaction, in this question actually specifically mentioned there how many carbonyl compounds can be possible. What is the mean of the carbonyl compound? Carbonyl compound are known as aldehyde or ketone. So directly it is given to you how many aldehyde ketone can be possible. What was the difference in the, what was the last question? What was the last question? How many benzenoid isomers are possible of the given molecular formula C7H8O? So in case of the C7H8O, you don't know which the structure we have to form here. But in this question, what the point is there? Exactly mentioning in this question that the carbonyl compound possible. Since we know very well how many carbonyl compound, how many aldehyde ketone are possible, so directly you have to draw the structure of aldehyde and ketone. Still you want to find out the degree of unsaturation. So how you will find out the degree of unsaturation? C plus 1, it means 5 carbon is there. So what you have to mention? 5 plus 1. So 6 is there. So C plus 1, it means 5 plus 1 minus H plus X minus N divided by 2. So H is 10, no halogen, no nitrogen is there. So divided by 2. So what will be the answer? 6 minus 5, it is having 1, and we know very well aldehyde and ketone both are having the double bond, so du will be there. It means the question is correct. Otherwise if we will not find out the du value, again we can find out the answer of the question. So directly we have to consider the number of possible aldehyde and ketone. How we will draw the number of possible aldehyde and ketone? Formula is C5H10O. Since our formula is the C5H10O, so we want to form the aldehyde first. So at first you have to mention 4 carbon and put a CHO here. Why CHO? Because aldehyde having the carbon atom and we want to draw the aldehyde. So total 5 carbon are there. Now what you have to do? You have to change the position of CHO. As you will change the position of CHO, so your next structure will be like that. If again you will change, or if again you will shift the CHO here, that will be the same case. Again you will shift the CHO, again same case will be there. So what the next thing will be there? In that condition you have to break the 4-member chain and you have to put the CHO. So it has become total 5 carbon. And now shift CHO at the center carbon. As you will shift CHO at the center carbon, in that condition the answer will be like that.
So how many total aldehydes are there? 4 aldehyde can be possible. Now you can complete remaining valency with help of the hydrogen. So you have to put the hydrogen here. On the basis of that, you can give the answer of the question. This is basically known as the aldehyde having the molecular formula C5H10O, and on the basis of that you can give the answer of the question. Now consider the ketone here. As you will consider the ketone, so what is the ketone? C double bond O group you have, and that C double bond O is connected with the carbon atom both side. So at first mention one carbon here and remaining carbon there. So 3 carbon will be there, 1 carbon will be here, and as you will draw the structure, in that situation your structure will be like that. Now see, if something can be changed in this CS2, CS2, CS3, if something can be changed in the CS2, CS2, CS3, so it can be like that. As it can be like that, so one structure is this, like this. Again something is possible, something changes is possible, I think no. So shift 1 carbon here. As you will shift 1 carbon here, in that condition, now both side 2 carbon will be there. You can do anything in the 2 carbon? No. In that 2 carbon? No. As again you will shift 1 carbon here. So 1,3 gases also we have here. So total how many structure will be possible? I think answer of this question will be considered as a 7. Total 7 structures are there, and you have to draw such type of the structure here. Now if we will find out the relation, so how you will find out the relation here? Suppose 1 is given to you and 2 is given to you. You have to find out the relation between 1, 2. If you want to find out the relation, so you have to find out the relation between 2, 3. If you want to find out the relation, so you can find out the relation between 3, 4. Now you can find out the relation between the 1, 5. You can find out the relation between the 5 and 6, and you can find out the relation between the 6 and 7. Now we want to find out the relation between these pairs, and according to that we have to give the answer of the question. So if we want to find out the relation here, this is structure number first and this is the structure number second. If we want to find out the relation between the first and second structure, it is very good question here. If we want to find out the relation between the first and second, in that condition, how it look like they are the positional isomer. Why position? What we will think? CHO is coming at the first position while the CHO is coming at the second. So since the position of CHO has been changed, but what is the reality here? If you want to find out the longest carbon chain, so it will be your longest carbon chain, and if you want to find out the longest carbon chain, then it will be your longest carbon chain. Since chain has been changed, in that condition they will be known as the chain isomer. Similarly, in a case of the 2 and 3, if you want to find out the longest carbon chain, so having 4 carbon, if you want to find out the longest carbon chain having 4 carbon, but the CS3 present on the second position while CS3 present on the third position, so they will be considered as the positional isomer. They are the positional isomer. If we will consider the 3 and 4, in the 3, the number of carbon atom having the 3 carbon in the principal carbon chain, while in case of the 4, in 3 there are total 4 carbon in principal carbon chain, while in 4 3 carbon are in the principal carbon chain. So chain is different, so you can give your answer chain. If you want to relate between the first and fifth, one is aldehyde, another is ketone. So they are having the different functional group, so they can be known as the functional group isomer. What is the relation between the fifth and sixth? If you want to find out the relation between the fifth and sixth, it's your chain here, it's your chain here. One is having 5 carbon, another is having 4 carbon. Since chain is different, so again they will be known as the chain isomer. And the relation between the 6 and 7, if you want to find out the relation between the 6 and 7, CO is bivalent functional group. Left side is methyl, ethyl. Isopropyl, ethyl, both group has been changed, so they will be considered as a metamers, and you will get the answer like that. And one thing I just wanted to explain here, if fifth is given to you and you want to compare fifth with the seventh, what will be the answer? Now see the fifth and seventh. If you want to find out the relation between the fifth and seventh, so the longest carbon chain have 5 carbon,
longest carbon chain have 5 carbon. In both cases, longest carbon chain have 5 carbon. CO present at second position, while CO present at what? Third position. It means position of CO has been changed. The one thing is that if we want to consider this structure, so CO is your bivalent functional group. Here CO is your bivalent functional group. Bivalent functional group have left hand side methyl, another side is propyl. Here ethyl and ethyl. So since bivalent functional group के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप का नेचर चेंज हो चुका है, so as the nature has been changed here, so they will be known as the metamer. So if you want to find out relation between these molecules, so they will be considered as a metamer. Now what the point here? If suppose you want to find out the relation between the 5 and 7. Now one option is given. Suppose the question is that what is the relation between this structure and this structure? And in the question, one option is the PI, another option is the metamer. And your question is single correct choice question. So what you will give the answer? Always remember, metamerism gets the priority over the positional isomerism. So if single correct choice is there, then my first choice will be the metamer. If metamer is not there, then give your answer as a positional isomer. So if the question is like that, how many isomers can be possible of the C5H10O? How many aldehyde ketone can be possible of the C5H10O? Then I think your answer will be like that, and this is the answer of the question, and this is the relation between the various pairs. If again one question is there, how many carboxylic acid and ester can be possible of the given compound? The C4H8O2 is given to you. And how many carboxylic acid and ester can be possible? Again, no need to find out the degree of unsaturation. Since in the question it is given that what? How many carboxylic acid and ester can be possible? So what it mean? You have to simply draw all the possible carboxylic acid and possible ester of the molecular formula C4H8O2. That's all. So if you want to draw all the carboxylic acid and all the ester having the formula C4H8O2, so no need to understand, no need to do any type of the next thing. Directly you have to attempt the question. How? Suppose you want to draw the number of structure of C4H8O2 and we want to draw the carboxylic acid. Since you want to draw the carboxylic acid here, so what the point I just wanted to show here, suppose 4 carbon are there and we want to draw the carboxylic acid. So how you will draw the carboxylic acid of 4 carbon? You can first draw the structure like that. 3 carbon chain is there and 1 carbon in the COOH. Now change the position of COOH. As you will change the position of COOH, it can be like that. Now you can break the chain in 3 carbon. No, in 3 carbon we cannot break the chain. So what will happen? Now nothing can be possible. So your 2 carboxylic acid can be possible. Which 2 carboxylic acid can be possible? The first carboxylic acid is like that, another carboxylic acid is like that. Now you have to draw the ester. As you will draw the ester, so ester is a COOR. Since we have done 1 carbon already at the left hand side, so you can put the hydrogen here because we have already put 1 carbon in form of the C. And the remaining carbon you have to draw at the right hand side. So how many carbons are remaining? 3. In that condition, it will be like that, CS2, CS2, CS3. Now see, we can do any type of the changes in the CS2, CS2, CS3. So if you want to do any changes in the CS2, CS2, CS3, so you can do such type of the changes here and that will be like that. Now something again we can do here, I think no. So just shift 1 carbon here. As you will shift 1 carbon here, so it will become as a CS3, C double bond O, CS2 and CS3. Now we can do anything in ethyl, I think no. So again shift 1 carbon here.
as you will shift again one carbon here, in that condition, what will be the answer? Now your answer will be like that, and this concept is basically known as the number of carboxylic acid and ester of the molecular formula, and the answer of this question is again 6. So if you want to do the such a type of the question, so I have already mentioned every question, I have already solved every question, so that we can use the mind how we have to attempt the question. Now again the same question is there. If we want to find out the relation between the first and second, how you will find the relation between the first and second? This is your first and this is your second. If you want to select the longest carbon chain in first, so it is having the 4 carbon. If you want to draw the longest carbon chain in second, so it is having 3 carbon. Since number of carbon has been changed, so they are basically known as the chain isomer. If you want to find out the relation between the second and third, so the second is carboxylic acid, third is ester, so they are having the functional group isomer. If you want to find out the relation between the third and fourth, how you will find out the relation? This is your third and this is your fourth. Now what we have to consider here, in that condition, this is the such a type of the group HCOO is there. As the HCO, C double bond O is there, now they cannot be the metamer because here is H, here is also H. Only here this side position is difference. So what the answer of this question may be, if you want to find out the relation between these molecules, so how you will find the relation in that condition? So one thing can be possible here. If you will select the longest carbon chain here, so it will be the longest carbon chain, and in the naming of this molecule, it is considered as a complex and longest carbon chain will be like that. So whenever you want to find out the relation, so they will be considered as the chain isomers. So these are relation. If you want to find out the relation between the 4 and 5, as you will find out the relation between the 4 and 5. This is your H, this is your CS3. Alkyl group has been changed, it's your propyl, there is ethyl. Now they will be known as the metamers. So answer of this question will be considered as a metamers. So as according to these type of the question, now we have got the point how you will draw the resonating structure of the molecule. So if you want to draw the resonating structure of molecule, if something is specifically mentioned in your question, what is mentioned in your question, that what we have to draw, in that condition no need to find out the value of du. But if nothing is given in your question and directly question is given like that, you have to draw the number of total isomer, then find the value of du, or according to that you can find out the number of double bond, triple bond and ring. Suppose this question is given to us, how many benzenoid isomers can be possible of the molecular formula C7H9N? Now how many benzenoid structure can be possible? Now if you want to find out the benzenoid structure, in that condition how you will find the benzenoid structure? So in a case of the benzenoid structure, at first you have to draw the value of du. What will be the value of du here? Number of carbon 7. So C plus 1 means 7 plus 1. H plus X minus N divided by 2. No halogen is there. So H minus N divided by 2. So what will be the value? It's your 8 minus 8 divided by 2. Total value will be the 4. Since how many benzenoid structure are asking in the question, it means you have to draw the structure of benzene. And we know very well the value of du is benzene is 4. I think after putting the benzene, there will be no double bond, no triple bond in the question. So how you will solve the question? The question is that C7H9N is given to you and you have to draw the benzenoid structure. So at first you have to put the CS2NS2 here. As you will put the CS2NS2, now you have to change the position of NS2 here. So in that condition, your NS2 will come at the ortho position. Now your NS2 will come at the meta position, and now your NS2 will come at the para position. These structure can be possible, and you know very well
what you know very well, in a case of the amine, secondary and tertiary amine also possible. So one secondary amine will form like that, and that will be the answer of the question. So if you want to draw the number of total structure here, so it's your first structure which can be possible, it's your second structure, this is your third structure, it's your fourth structure, and this is your fifth structure. So how many total structure are possible there? In that condition, you should know how many total structure will be there. 5 structure can be asked. So if such a type of the question is given to you and you want to find out the number of total isomers in that situation, according to the degree of unsaturation, you can identify the molecule, you can identify the number of double bond, you can identify the number of triple bond, and on behalf of that you can find out the answer of the question. So this was the part of the structural isomer where the molecular formula is same, molecular weight is the same, but the structure and will be the different, so they will be known as the structural formula.